No doubt celebrations across the entire continent of Australia as we speak. They've won the World T20 for the first time in their history. And I have to say they did it in great style. They did it with consummate ease. And they deserved everything that's come their way actually today in the semi-finals and as they progressed through the group stages as well. So our congratulations from all of us here on Game On Hay to the winners of this World T20 Australia. Let's just recap then on the details of that victory. Just have a quick look through the match summaries, the cards, all those things that just bring it all back to mind. So we can look at the match summary first. That will just confirm exactly the way this game went. 172 for 4 New Zealand, 173 just for 2 Australia. With the time in hand, they made early inroads to the target. They kept up and they accelerated past the asking rate. So they won very comfortably in the end by 8 wickets. And New Zealand, of course, led beautifully by Kane Williamson, 85 from 48. That kept them in the game. But just look at the response. Marsh, 77 not out at the end. Warner, electric at the start, 53 in the end from just 38. Maxwell just contributing towards the end. So it is the Aussies who are very happily celebrating a very, very good night out in Dubai. Sound a very good evening to you, panel. Good evening to you as well. Some would say it was predictable about some 4 or 5 hours ago. Yes, once the toss was done, a lot of people started saying that it will be Australia. But most of our panel said even before the toss, it will be Australia. Well, yes, I know. I mean, Australia, to be fair, Australia had played some very good cricket leading up to this. The semi-final was a very fine performance, very dominant performance. Again, we've seen a very dominant performance tonight in the final as well. And as Saviv was saying all the way through the last week or so, if you peak at the right time, get your best cricket out at the end, then this is what happens. And I hate to say that again. Okay, Akib. But no, just give us a view about Australia's performance. Oh, they were just magnificent. We felt that they had a slow start, and especially what England did to them in terms of that batting performance from Butler. You know, it was. We felt that they were a little bit below par, but as the tournament progressed, they became better and better. All the individuals that people spoke about not being in the best of nick came to the party, and that's what your team need when you are down towards the business end. And they took care of business in a very, very impressive way. Indeed. Akib, can we just ask you, I mean, this whole thing about the toss, I know we did the figures this morning, is, you know, again, Dubai has gone through this entire World T20, seeing the side that bats second, winning the game. So, I mean, that's a fact. It's as simple as that, it's a fact. Looking at the way Australia played today, how much of a factor was the toss, do you think? I mean, look, there is an advantage, and so far nobody defended any total. Even today was like, it's a quite good total when it comes to the finals pressure movements, and even 117 in any ground, it's a tough total. But the way I think the dew does a bit. Ball started skidding on, lesser spin, lesser grip, so it's definitely helped batter to smack. But I think it's about rising at the right moment. We have seen so many times that one team cruising unbeaten like Pakistan, played another one game and go home. So this is, I think, a perfect recipe for any team. Have a bad game in between and then settle your... it's about the momentum and it's about the brand which you're carrying, because Pakistan was so exposed the way they were playing their game, lesser in power play and same intensity in the middle and scoring large number of runs in the last 5. And then when it comes to the good bowling units, they can challenge you. But if you see Australian batting, they have like 5 to 6 5-power in their batting. Only Smith is like, you can make him quiet. Otherwise, they're all powerful. Look at Marsh. He's huge and he can smack you all over the place. They have many options. Maxwell, Stones,
and you seen the other day the lefty Matthew Wade. So actually they have a very good batting side, and if you discuss their bowling, they have good bowlers. Hazelwood, I think, is one of the best seam bowler around. Zampa, he's the champion. Nobody actually charged him in this tournament, so I think well-deserved victory, I would say. Okay, well, let's test the left wing, see what they think. बिल्कुल स्टार्ट हम करेंगे राशिद भाई। जब हमने देखा इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मैच हारे, उसमें मिच मार्श को इन्होंने बाहर बिठाया, एस्टन एगर को खिलाया, उसने भी इवन रन्स किए, हाँ रन्स भी उसने किए उस जगह पे, नीचे आके अपनी जो उसकी रोल था वो पूरा किया, पर उन्होंने देख लिया उस वक्त कि भाई हमारी बैटिंग इसके बगैर काम नहीं करती, और आज वही प्लेयर आके फाइनल जिता देता है। देखिए 2015 के बाद कोई इवेंट नहीं जीते, वो होम था इनका, माइकल क्लार्क इनका कैप्टन था, लेकिन सबसे बड़ी जो मुसीबत आई थी 2018 बॉल टेम्परिंग केप टाउन, उसके बाद इनकी टीम संभल नहीं पा रही थी। एक साल की पाबंदी लगी स्मिथ पे, बैंक्रफ्ट पे, वार्नर पे ऊपर। उसके बाद बिगेस्ट न्यूज़ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में ये आज की है कि इन चैम्पियन जो हुए हैं, वो इंसिडेंट के बाद इनके स्पॉन्सरशिप में कमी आई थी, KFC छोड़ गया था, बिग बैश छोड़ गया था, क्वांटस एयरलाइन छोड़ गई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से इनके प्रॉब्लम आ गया था। कॉन्ट्रैक्ट इनके कम हो गए थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए थे, ये उनके गवर्नमेंट के रूल्स थे जिसके मुताबिक उनको सजाएं दी गई। लेकिन जिस तरह से वापस आए, और डेविड वार्नर को आपने क्लिप में देखा होगा, और स्मिथ एक साथ गले मिल रहे थे, वो रिमाइंड करता है कि केप टाउन के इंसिडेंट को, कि वो अभी तक दोनों इकट्ठा हैं, बस बैंक्रफ्ट इनसे ड्रॉप हुआ है, और वो लेके चलें पूरी टीम को। जो टीम की परफॉर्मेंस है, ये सब वो जो इंसिडेंट हुआ है ना, उसको धुलाने के लिए आज ऑस्ट्रेलिया दोबारा खड़ी हुई है। अब ये वाला दौर शुरू होगा 96, 99, 2003, 2007 ऑस्ट्रेलिया फाइनल के लिए वो चैंपियन बनी। नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, तो याद रखिएगा ये टीम अब रुकने वाली नहीं है। बात तो आपने बड़ी ज़बरदस्त की। मैं आज तक उस इंसिडेंट पे एक बात पे परेशान हूँ कि फास्ट बॉलर कोई भी नहीं था इसमें से जिनके लिए बॉल तो हमारा भी फास्ट बॉलर कोई भी नहीं करता था, सारे बैट्समैन करते थे। पकड़ा कोई नहीं गया उसमें बेचारे बैट्समैन की। ये ब्रॉडकास्टिंग का फॉल्ट था जो वहाँ पे हुआ, ब्रॉडकास्टिंग का फॉल्ट था, क्योंकि करने अलाउ नहीं है किसी को भी कि आप उसको वीडियो बनाएं या कुछ करें। तो साउथ अफ्रीका ने अपना नुकसान खुद किया है, ऑस्ट्रेलिया का तो हुआ जो हुआ, साउथ अफ्रीका ने अपना नुकसान खुद किया और उसको बड़ा ज़बरदस्त। अब राशिद भाई की प्रेडिक्शन है कि ऑस्ट्रेलिया बड़े पावर से वापस आने वाला है। ये प्रेडिक्शन तो आज न्यूजीलैंड की भी थी। उसने आज इसके बाद अगला भी उनको दे दिया। रिएक्शन ये हुआ है 3 घंटे बाद रिएक्शन ये हुआ है, तो ये तो क्या कि उन्होंने अगला भी दे दिया। जब हॉकी खेलते हैं ना तो आप बात से बात निकालते हो, देखे फिर मुझे वर्ल्ड कप देके मैं इनके पास चला गया ना। अब आप बोलें क्या बोलते हैं? What's going on around here? I have to bring you guys in here because Rashid bhai predicted that New Zealand is going to win. So he's now predicted that after, because of all the ball tampering that happened, so it was Warner and Smith. Yeah. You could see them together. It meant a lot for them because after 2015 nothing big happened in Australian cricket. So he's saying that now after this World Cup, Australia is going to become great again, the cricket team. So he predicted that. So I asked Azhar, what do you think about that? And he said, well, he predicted about New Zealand also. Okay, yeah. Well, as we all know, predicting anything in this game is a mug's game. Yeah, things can change by the minute, by the hour, by the game, by the tournament. One thing I can predict is Australia will not be caught ball tampering again for a couple of years. Are you sure? A couple of years. Just say for a couple of years. And if they do, they're very stupid. जी अजहर भाई जी तो फिर शुरू करें कहाँ से? बॉल टेम्परिंग आज क्या सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस आपको आज किसकी लगी इस पूरे मैच में? ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेला है, दे वर रूथलेस, मतलब जिस तरह की उनकी इंटेंट था, जैसे ही वो आए बॉलिंग में भी आए, जिस तरह अप फ्रंट जो है, ठीक है मिचेल स्टार्क को रन्स हुए, लेकिन उसके बाद जो है हेजलवुड की हमने बात की, ही वाज एक्सेप्शनल जिस तरह की उसने बॉलिंग किया। अगर 4 ओवर में 16 रन दे के 3 आउट करना, तो दे वर रियली रियली गुड। तो मैच तो
आई थिंक ये क्रेडिट जाता है केन विलियमसन को, जिस तरह की वो क्रिकेट खेले आज, जो हमने बात की थी सुबह भी के सिचुएशन के हिसाब से वो खेलते हैं। और आज अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो कहाँ पे 100 का स्ट्राइक रेट था या 90 का स्ट्राइक रेट था, आज 177 का स्ट्राइक रेट है। तो ही इज़ अ क्लास प्लेयर, मतलब क्लास एक्ट। अनफॉर्चुनेटली वही जो सुबह बात कर रहा था मैं कि आपके रन्स जो है ना वो 170, जैसे पिछले मैच में देखा हमने 176 किया था तो वो भी चेस डाउन हो गया, क्योंकि ड्यू की वजह से आपके स्पिन भी जो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बॉल बल्ले पे अच्छा आता है। और जिस तरह फिर अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, जिस तरह वो खेले हैं, स्पेशली डेविड वार्नर आप फ्रंट जो है ना, उन्होंने शुरू से ही चार्ज रखा। और उसके बाद मिच मार्श हमारे खिलाफ भी जब वो आए पहले बॉल पे उन्होंने छक्का मारा, आज भी उन्होंने पहले बॉल पे छक्का मारा। तो वो इंटेंट बड़ा क्लियर था। एक टाइम पे ऐसा हो रहा था कि डेविड वार्नर स्ट्रगल कर रहे थे, 25 बॉलों पे 25 रन से उनके, लेकिन मिच मार्श ने आके जो है ना उनके ऊपर से प्रेशर हटाया और जिस तरह की उन्होंने क्लीन स्ट्राइकिंग की है, अनबिलीवेबल। और न्यूजीलैंड बैटिंग की थोड़ी सी बात करके फिर मैं उमर भाई के पास जाती हूँ। गप्टिल आज काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे, और हमने देखा पिछले 2 सेमीफाइनल्स में भी 170 के करीब रन बने, 4 ही विकेटें गिरी हैं। फाइनल के टाइम पे आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा शायद और इनको एग्रेशन बीच में लाना चाहिए था किसी टाइम पे, क्योंकि एक केन विलियमसन ने तो अपना रोल प्ले किया पर बाकी बहुत ज़्यादा शायद हेजिटेशन थी उसको तेज करने का रन रेट। अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें, क्योंकि सेकंड टाइम पे हम ड्यू फैक्टर की बात करते हैं, बॉल थोड़ा गीला हो जाता है, पिच पे थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाती है तो उस पर बॉल बल्ले पे आना शुरू हो जाता है। पहले टाइम पे जो पहली पिच होती है उस पर अगर आप देखें तो बॉल इस तरह बल्ले पे नहीं आता जिस तरह सेकंड टाइम पे आता है। और पहले अगर आप देखें कि जितने भी थे पहले 10 ओवर जो भी टीम ने बैटिंग की है उनको थोड़ी मुश्किल हुई है, वो बॉल सीम और स्विंग नहीं हो रहा था, लेकिन जो बॉल की ग्रिप हो रहा था उस पिच पे तो इतनी आसानी से आपके शॉट नहीं लगते। जो सेकंड टाइम मेरे दिमाग में था कि नहीं सेकंड टाइम पे ना बॉल बल्ले पे नहीं आएगा तो आपके रन नहीं बनेंगे। 2-3 ओवर में आता है, जैसे फखर ने भी मारा, आज भी हुआ 10। मैं वही कह रहा हूँ कि 10 ओवर के बाद जिस वक्त केन विलियमसन खेले उसमें थोड़ा सा वो लकी रहे, जो एज के 2 चौके हुए, उसके बाद जो मिचेल स्टार्क ने उस ओवर में मेरे ख्याल 26 रन हुए थे, पहले ड्रॉप हुआ और उसके बाद वो बाउंड्री मिली, उसके बाद लेकिन उन्होंने अच्छे शॉट खेले। उस वक्त बॉल जो है ना बैट के ऊपर आना शुरू हो गया था। अगर आप देखें वो वाला टाइम देखें और अर्ली ऑन देखें तो बॉल उस तरह बैट के ऊपर नहीं आ रहा था, जिस वजह से आपकी टाइमिंग, आप बॉल को टाइम नहीं कर सकते थे। जॉश हेजलवुड और ट्रेंट बोल्ट दोनों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। एक ने फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग कराई, हेजलवुड ने 4 ओवर्स में 16 रन देके 3 आउट किए, और फिर सेकंड टाइम पे जहां थोड़ा सा बॉल बेहतर भी होता है पर नया बॉल क्योंकि ट्रेंट बॉल कराते हैं, उन्होंने भी 4 ओवर में 18 रन देके 2 आउट किए। इन दोनों बॉलर्स के बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरह हेजलवुड ने पहले इनिंग में जिस तरह की बॉल की है, ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और जिस तरह अर्ली ऑन हमने बात की कि कैप्टन उसको यूज़ करता है, मोस्टली पावर प्ले में 3 ओवर कराता है, तो वो जितना इकोनॉमिकल और जिस तरह उसकी जो लाइन लेंथ है लेफ्टी और राइटी को बड़ा ज़बरदस्त कंसिस्टेंट लाइन लेंथ के साथ बॉल कर रहा है, और फिर बीच में उसको लेके आए। आई थिंक वो उस टाइम पे उसका जो एक ओवर था टर्निंग ओवर था, क्योंकि उसमें अगर आप देखें जो बॉलर उस टाइम पे बॉल कर रहे थे ना, बॉल स्किड होना शुरू हो गया था, बल्ले पे ऐसे ही आ रहा था, लेकिन उसने अगर आप देखें उससे पहले भी जो पैट कमिंस ने बॉलिंग की है तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपने जो वेरिएशन यूज़ किए, उसने पूरे 6 के 6 बॉल स्लो वन किए थे, और फिर जो हेजलवुड ने किए आई थिंक उसने ओवर में 3 नकल बॉल की जिसमें उसको विकेट भी मिल गए, और एक बॉल उसमें स्लो वन सीधा स्ट्रेटर वन किया था। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त अपने वेरिएशन का यूज़ किया, और मेरे ख्याल से वहाँ पे जो बैक टू बैक जो 2 विकेटें मिली है हेजलवुड को, वहाँ पे भी थोड़ा सा मोमेंटम उनका रुक गया, जो रन्स का मोमेंटम था वो स्लो हो गया। मे बी कि अगर वो ओवर अच्छा ना हो जाता और वो विकेटें ना मिलती तो मे बी 10-15 रन और ज़्यादा हो जाते। ट्रेंट बॉल्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से ओवरऑल टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन बॉलिंग उसने की है, नए बॉल के साथ भी और फिर मिडल में भी और एंड में भी, और आज फिर उसने फ्रंट से बड़ा ज़बरदस्त एक जो एक होता है ना कि उसकी गेम अवेयरनेस, जब वो फिंच ने उस पर चार्ज किया डाउन द विकेट, उसने एकदम से अपने लाइन को चेंज किया, बाउंसर किया, उस पर उसको विकेट मिली। आई थिंक वेरिएशन का बड़ा ज़बरदस्त थ्रूआउट उसने यूज़ किया, और जो कंडीशन थी यूएई की उसका ज़बरदस्त यूटिलाइज़ किया। Yeah, so a lot of performers to talk about in Australia, of course, Warner, Mitch Marsh and Hazelwood.
Okay, well, they're all due to be talked about as we go through the show. There's some video we'll show you in due course. There's performances we need to mark on this special day. For now, though, let's just take a break. We'll be back with you in a moment or two with Game on Hay.